Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and we are starting off with a new chapter, that is cell, that is the basic constituent of any living thing that exists on earth. So the topics that we will cover in today's lecture, they include introduction of how we can define cell, how cell came into discovery, and then we will also cover the components that include the instruments that were discovered to study different components of cell, and finally we will differentiate between the two basic types of cells, that are prokaryotic and eukaryotic cell. So by the end of today's lecture, you should be able to define what is a cell and how it came into existence through different researches, how different scientists played their roles according to their availability of research technique, और किस तरह से उन्होंने over the period of time different cell के components को discover किया. Then we will discuss the different lab techniques that have been introduced to discuss the components of cell, and finally we will study the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Coming to the definition of cell, so these are the three different definitions that we use to define a cell. That is, that cell is a basic structural and functional unit of life, the smallest units that can carry out activity of life, and also the building block of complex multicellular organisms. ठीक है, तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, तो ऑब्वियसली एक जो सेल होता है, that is the simplest unit, it has the capability to perform different types of functions of life. Coming to the discovery of cell, so the first of all, the cell was discovered in the late 17th century, where Robert Hooke studied the structure of a cork that appeared to be a honeycomb structure, and he found out that cell is an empty space bounded by thick walls. And later on in the 19th century, it was found out by a German scientist that all living things, they come into origin from uh, a vesicle or a cell. And then later on in the 19th century, there was scientist Jean-Baptiste Lamarck, who stated that no body can have life if its basic constituent is not a cellular tissue or a cell. Then later on, the research continued in the 19th century with better techniques, and it was found out by Robert Brown that there is a presence of nucleus. तो अब आप देख सकते हैं कि starting off with the late 17th century, जिस तरह से different techniques में modification आई, उस तरह से different scientists were able to modify the research on cell, and they were able to justify and give their own opinion on the cell and its identification of its different structures. So in 1831, Robert Brown discovered the presence of nucleus, and then in 1839, Childen and Shawn, the zoologists, they gave their cell theory, that what cell is, what are its different components, and what is the importance of a cell relevant to any living thing that exists on earth. So these are the three postulates of the cell theory, that all organisms are composed of one or more cells, and the cells that are already existing, they arise from pre-existing cells. So ये phenomena हमें नज़र आता है जब भी हम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या एम्ब्रियोलॉजी वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, कि सेल जो है वो कंबाइन करके प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सेल. ठीक है, then it's the basic structural as well as a functional unit of all organisms. So this was a cell theory that was introduced somewhere in the mid of the 19th century by two scientists, Shildon and Shawn. Then the significant findings that continued later on in the 19th century were the findings of of Rudolf Virchow, who introduced that new cells are formed only by the division of pre-existing living cells. So this is the phenomena that we cover even in the embryology section. जो हमने definition पढ़ी थी, उसमें भी क्या था
कि फर्टिलाइजेशन होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की, वो फ्यूज़ करके एक सेल बनाते हैं जो कि डिफरेंशिएट होता है फिर एक multicellular organism. Then later on it was discovered by Pasteur that microorganism, even bacteria, they develop from already existing bacteria. तो bacteria में भी आपको पता है it is composed of a cell. And it was then also stated by August Weismann that all presently living things, they have common origins because they have basic structural similarities. Structural similarities में भी obviously cell जो है, that is the basic component that we discuss. Then we come to the different lab instruments that have yet been used to study cell and different components of the cell at micro level. So after going through how the cell and its different components they were covered over time, what were the different researches starting off with the 17th, 18th and the 19th century, we will now come to the different instruments that have been used to discover and to examine the different components of a cell. तो यहाँ पे हम दो माइक्रोस्कोप्स के दरमियान जो है वो अब कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप्स अभी तक यूज़ हुए हैं और इनका हमें किस हद तक एडवांटेज होता है व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दैट यूजेस सिंपल लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे कि हम सैंपल को विजुलाइज कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में देयर इज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ एक्सपोज टू द सैंपल, जिसकी वजह से हमें सैंपल जो है वो उसके कंपोनेंट्स जो है नज़र आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है द रिजॉल्विंग पावर और द रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, रेजोल्यूशन पावर जो है किसी भी माइक्रोस्कोप की वो ये होती है कि हम दो डिफरेंट पॉइंट्स को क्लैरिटी के साथ अलग अलग देख सकें। ठीक है, सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप कि दो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को वो हमें डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग से दिखा सके। तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है टू magnify to clarify two different objects, that is higher। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ द एबिलिटी टू make two or more objects very clear under it। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर पे आ जाएं तो ये होती है दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू मेक एन ऑब्जेक्ट लुक लार्जर एंड क्लियरर। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, दैट इज़ हायर बिकॉज इट यूजेस अ वेरी हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक तो ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और 2, 3 या 4 जितने भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ अलग अलग हम देख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स को यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो हमें बार बार ऑब्जेक्टिव लेंस को जो है वो एडजस्ट नहीं करना पड़ता। वी जस्ट कैन ईजिली मैग्नीफाई इट थ्रू द बाय ऑपरेटिंग इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक पॉइंट यहाँ पे ऑब्वियसली रिपीट हुआ है, ओनली सरफेस ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ सेल के कंपोनेंट की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ हमें एक सेल या उसकी आउटलाइन ज़्यादा विजिबल होगी इजीली, जबकि जो उसके अंदर की ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिटेल स्टडी के लिए वी ऑलवेज नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यू कैन सी ये चूँकि इसकी मैग्नीफाइंग या रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इट मीन्स के जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लैरिटी ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मिलेगी। देन लास्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज सिंपलर टू यूज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दैट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ अ ट्रेनिंग, सो यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस टू यूज दिस लैब इंस्ट्रूमेंट। डायग्रामेटिकली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि हमारे यहाँ पे स्कूल या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, सो यू कैन सी द आई पीस, यहाँ से हम विजुलाइज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि हमने इस स्टेज वाले कंपोनेंट के ऊपर इन दो क्लिप्स के दरमियान प्लेस किया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द हेड पोर्शन, ये आर्म वाला पोर्शन है जिससे कि हम इसको इजीली उठा के मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन यू हैव द नोज पीस ओवर हेयर। उसके बाद ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस की बात जो हमने की थी डिफरेंसेस में, दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज ओवर हेयर जिनको कि हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेस वाले एरिया के अगर आप करीब आएँ तो दिस इज़ द बेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ द लाइट सोर्स और द इल्यूमिनेटर जिससे कि लाइट पास करती है इनटू दिस आइरिस और डायाफ्राम जो कि एक एडजस्टेबल कंपोनेंट है, और फिर लाइट इस कंडेंसर से पास करके इस जिस एरिया के ऊपर सैंपल पड़ा होगा वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आएगी और फिर आप थ्रू दिस एरिया उसको विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस। सो दीज आर द डिफरेंट areas of or the components of an compound microscope over here। ठीक है, तो फिर ये उसके बाद फाइन और कोर्स एडजस्टमेंट है। तो जब भी आपने फाइन कंपोनेंट्स को देखना होता है तो उसके लिए आप ये वाला जो है फाइन एडजस्टमेंट या फाइन फोकस नॉब जो कि इसकी स्मॉल छोटी नॉब लगी हुई है, इसको इससे आप फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट होती है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना है, क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट लेके जाना है या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप ये कोर्स फोकस वाली जो नॉब है इसको रोटेट करते हैं। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर हेयर। तो यहाँ पे हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी मशीनरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर जिसमें कि हम सैंपल को प्लेस करते हैं थ्रू दिस डोर ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है वो इस चैम्बर में प्लेस किए गए जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डाली जाती है, और ऑब्जेक्ट को आप थ्रू दीज टू सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने इसमें प्लेस किया हुआ है उसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे विजुलाइज हो रहे हैं इजीली। फिर सेकंड जो सिस्टम होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है कि जब भी हमने किसी भी डिफरेंट इमेजेस को जो कि डिफरेंट मैग्निफिकेशंस पे हमने लिए हैं उनको इन फॉर्म ऑफ फोल्डर्स हम दूसरे सिस्टम में सेव कर रहे होते हैं। सो दिस इज द बेसिक mechanism of this machinery, slightly complex. You should know how to use this chamber like area and you should also be qualified to operate these two systems. So technically you have to be a bit more experienced to operate this type of microscope. So now we will come to the two different types of cells, the prokaryotic and the eukaryotic cells, how they actually differentiate from each other. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, सो इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर मटेरियल जो है दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर मेम्ब्रेन के साथ sort of any sort of a membrane might be present in its surrounded, जबकि यूकैरियोटिक सेल में a well-defined nucleus bounded by a double membrane, and that nucleus basically contains all the न्यूक्लियर मटेरियल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ओनली न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट विद इन द सेल। जनरली जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे कि हम आगे जाके डिफरेंट ऑर्गेनल्स का पढ़ेंगे तो हम ये भी उनमें कवर कर रहे होंगे कि उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी अपरेटस है, दे आर बाउंडेड बाय सर्टन मेम्ब्रेन्स जो कि हमें प्रोकैरियोटिक सेल के केस में नहीं मिलता। Thirdly, we have ribosomes that are smaller in size in case of prokaryotic cell made up of 70s। तो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं 60 और 40 सब यूनिट्स बेसिकली कंबाइन करके तो राइबोसोम्स को बना रहे होते हैं। तो जो राइबोसोम्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में बनेंगे दैट इज 70s, एंड राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक दे आर लार्जर इन साइज। बाकी जो 20% या 30% कंपोनेंट होता है दैट इज यूज्ड अप इन formation of these two types of ribosomes। Then cell divides through binary fusion यानी कि 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, तो this is the mechanism of cell division in case of prokaryotic cell। जबकि mitosis
के थ्रू जो है सेल डिवीजन हो रही होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि हम देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो है पहले क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं और फिर जो है वो सेल जो है वो एक से दो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एक यूकैरियोटिक के केस में इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स। ठीक है, लास्टली आप देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है, जिसमें कि ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज़ नॉट कंटेन्ड इन अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस, और ऑर्गेनेल्स भी जो हैं उस तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास प्लांट्स और एनिमल सेल की एग्जांपल आ जाती है। So this is the end of our video. Do like our video if you find it interesting and share it with your colleagues. कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारी इस वीडियो से रिलेटेड, और कोई भी आपको अगर सजेशंस हैं आपकी कि हम किस तरह से फर्दर अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, do mention them in the comment section. Last but not the least, do not forget to subscribe to our channel Learning Biology Online and click the bell button ताकि आपको हमारे वीडियोस के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो कंटिन्यूसली रिसीव होते रहें। थैंक यू वेरी मच।